नामदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, the creator of the universe and the source of all blessing, honorable principal, esteemed guest, respected parents and my little Oxfordians, Assalamu alaikum. It's me, Hamza Sultan. And it's me, Malaika Sultan, your host and comparer for today's 36th annual prize distribution ceremony. On the behalf of the Director of Pak Junior School and Colleges, Dr. Muhammad Ibtihaj Tariq Sahab. It's a pleasure to welcoming you all on this wonderful event. We honored to be a part of this special occasion and look forward to making it a memorable one for all of you. It's truly wonderful to see all your bright faces here today. We are so delighted and honored to be your host for this 36th annual prize distribution ceremony. This is a special time. We have all been excited about a day dedicated to celebrating all the fantastic achievements, the hard work and the wonderful talents that have shined brightly over the past year. Let's make this a memorable day together. मेहमानाने गिरामी, काबिले कद्र साज़ा कराम और अज़ीज़ तालबा, आज हम एक ऐसे मौका पर जमा हुए हैं जहां हम अपने बच्चों की मेहनत और कामयाबियों का जश्न मना रहे हैं. पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेजेस, जो कि तालीमी मैदान में अपनी मुनफरिद हैसियत रखता है, इस साल भी अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए एक और शानदार साल मुकम्मल कर चुका है. आज का दिन पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेजेस के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज हम अपने मायानाज तलबा की कामयाबियों को सराहने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं. पाक जूनियर स्कूल्स एंड कॉलेजेस ने हमेशा तालीम के साथ साथ इखलाकियात, रवादारी और समाजी खिदमत के जज्बे को फ़रोग़ दिया है. यहाँ के उस्ताज़ा न सिर्फ तालीम देते हैं बल्कि तलबा की शख्सियत साजी में भी अहम किरदार अदा करते हैं. इसके साथ साथ आज हम इस बात का इतराफ़ करते हैं कि तलबा की कामयाबी में वालिदैन का किरदार भी सबसे अहम है. आपकी मेहनत और तावन ने तलबा को आज इस मकाम तक पहुंचाया है. आज का दिन हम सब के लिए फख्र का दिन है. So it's a time to say a heartiest welcome to our audience and our all chief guests. I say a heartfelt and deep felt welcome to all the glorified and dignified chief guests of this mega event and the most respectable parents. Thank you so much for coming. Once again, I warmly welcome to all of you on the behalf of the Director of Pak Junior School and Colleges, Oxford Campus, Dr. Muhammad Ibtihaj Tariq, hardworking coordinators and from the whole mind-blowing team on this 36th annual prize distribution ceremony. सब नाम है गुम जिसमें वो है नाम खुदा का. सब नाम है गुम जिसमें वो है नाम खुदा का. ये काम है वो काम है हर काम खुदा का. मस्जूद कहे गैर नामाबूद कहे गैर, मस्जूद कहे गैर नामाबूद कहे गैर, बंदा है हर एक बंदाए असनाम खुदा का. हर काफिरो मोमिन का वो मोमिन वो महीमन, हर काफिरो मोमिन का वो मोमिन वो महीमन, हर कुफ्र खुदा का है इस्लाम खुदा का. Allah is the one, the eternal and the absolute, the creator of the heavens and the earth. He is the most merciful, whose mercy encompasses all things. Through the Holy Quran, He reveals His attributes and invites us to encourage His immense power and boundless love for this creation. बेशक. We begin this gathering in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. There is no better way to start our proceedings than by listening to the divine words of the Holy Quran. It is a book that brings light to the darkness and provides a healing touch to the restless heart. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अकेला इस पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है. वो अल-मुतकब्बिर है, वो अल-अज़ीम है, उसकी बादशाही ज़मीन से आसमान तक फैली हुई है. बेशक, डियर ऑडियंस, Allah is the supreme creator,
the one who fashioned the universe out of nothingness with a single command, be and it is. He is the architect of existence, the sustainer of life, and the one whose power knows so bound and whose no bound wisdom encompasses all things seen and unseen. Its verses serve as a bridge between the Creator and the creation, providing a timeless source of wisdom that remains unchanged and preserved for all eternity. For further proceeding, I would like to call our first comparer of this mega event. Do a wonder of clap for the little shining stars, Moses Ali and Zonia Ali from Assalamu alaikum. It is a matter of great pride and pleasure for us to stand before you as your host today in 36th Annual Prize Distribution Ceremony. My name is Zonia Ali. And my name is Moses Ali. From grade 3, we are honored to welcome you all to this special occasion. We hope this event will be a memorable experience for everyone. Let us begin with the grace of Allah Almighty. Allah is the one who made everything we see. He created the bright sun, the silver moon, and the most beautiful green tree. He is the most powerful and the most kind. He loves us more than anyone else. ज़मीनो आसमां का मालिक वही है. ज़मीनो आसमां का मालिक वही है. हर एक दिल की धड़कन में बस वही है. The Quran is the word of Allah. It is a beautiful book that teaches us how to live a good life. It is like a bright light that shows us the right path. When we read the Quran, we feel peaceful and our hearts become happy and calm. कुरान की हर एक आयत में नूर है. कुरान की हर एक आयत में नूर है. इसे पढ़ने से हर दुख होता दूर है. Allah is always listening to us. We can talk to Him anytime, anywhere. When we make dua, Allah hears our whisper. He knows what is in our hearts and always gives us what is best for us. He is our best friend. मैं जो भी मांगू मेरा अल्लाह देता है. मैं जो भी मांगू मेरा अल्लाह देता है. वो मेरी हर दुआ को सुन लेता है. Allah loves those who are kind to others. The Quran tells us to speak softly, help the poor, and respect our parents. Every small good deed, like smiling at a friend or helping others, makes Allah very happy with us. नेकी की राहों पर हमें चलना सिखाया. नेकी की राहों पर हमें चलना सिखाया. कुरान ने ही हमें इंसान बनाया. Following the Quran means following the light. It teaches us to be honest, brave and truthful. By keeping Allah in our hearts and the Quran in our hands, we can never get lost. We are proud to be kids who love Allah. रहे दिल में हमेशा यादें खुदा. रहे दिल में हमेशा यादें खुदा. ना हो कभी हम कुरान से जुदा. Thank you. Very good, dear students. Now, it is my pleasure to call upon Tanzilur Rahman to share a soulful recitation with us. Please give them your full attention. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. MashaAllah, Jazakallah khair. May Allah accept this beautiful recitation and shower His infinite blessing upon all of us. Truly, the words of the Holy Quran are the ultimate source of peace for our souls and guidance for our lives.